subjects? GMT and topic? Body shape. Study. Why is body shape study important in fashion design? Because all design depend on Body shape. body shapes. So how many basic body size here? 8. 8. Which one? Read, Maninder. First है hourglass. Define Second round and please, apple. please defined karo. Hourglass 33 characterized by shoulders and hips are in proportion with a small defined waist like an hourglass. Great curves, breadth and bottom are fall, which creates the curves. Next, round and apple, characterized by shoulder and hips are in proportion with a larger waistline, tummy, or softness to the tummy. Second, good legs. Third, often have a large bust. Definition of Round and apple. round and Shape. apple. Okay. Round and apple body have a heavy bust. Like 40, 42, 45, right? So you can call round or apple size body and second one, right? Yes. And second very important, round apple body have a heavy hip also. So it's look like round. Upper body look like round is called apple shape body. ठीक है? They have a good legs, often have a large bust. So what is the pear shape? Mridula, read please. What is the pear shape? Please character define कीजिए. Do define the characters. Shoulder and waist. Shoulder and waist are similar than the hip and bottom. So it's look like pear, right? Small waistline and full rounded bottom and extra weight on thigh. So this kind of body have a heavy thigh. You can see somewhere is some women have a very heavy thigh compared to upper body. Chest slim, shoulder slim, waistline slim, but the thigh is very heavy. So it's called pear shape body, right? Next one, inverted triangle. So it's what means inverted triangle. Shoulder is the broad compared to lower body. Known as the similar shape, shoulder are larger than the waist and bottom. What that mean? Inverted triangle. Next one, and what is the quality? Great legs, small bottom. It's like athletic body. Have you seen that athletic body? It's called V shape. Athletic body is called V shape. Next one, lean column. It's like a column type slims, no shapes, just straight column. What is the fifth number shape? Rectangle. It look like lean column. Column means, have you know that what is the column? Lean column. It means straight. Shoulder, hip, and waist are in proportions
Yeah, and quite lean, narrow shoulder, small waist and hip. Flat chest or small bust, flat bottom. It's like no shape. It's No. called, it's for the example, it's called no shape. Okay. Now next one is sixth number, rectangle. You have to see somewhere some women have a rectangle body, no shape in this straight body. Yes. Shoulder are quite square, athletics and are propositions to waist and hip. Very little waist definitions and they have a good legs. Next one. What is the next one, Maninder? Petite. Next one Petite. is petite. Petite. Petite is called very similar to pear. Short in height, generally below 158 centimeter. Short through the torso and short leg. You can be number of the shape, but the main characterize in a height. It's called you can call that short height body. Okay. Next one is the plus size. What is the next one? Plus size. Okay. So plus size, it means double XLs, triple XLs, 4XLs under the plus size, right? So what is the characterized by? Tall, tall in heighted, or bigger in size. Both. Okay. Above a size U 16, very curve and carry extra weight, great bust, large hip and bottom also. So yes. So plus size have a good heights also, and plus size and small height also. प्लस साइज दोनों में होता है, लंबे में भी होते हैं, लॉन्ग में भी होते हैं प्लस साइज, और मीडियम हाइट में भी प्लस साइज होते हैं, और स्मॉल हाइट में भी होते हैं. तो टोटल हमने कितना साइज यहाँ पे देखा. मनदीप, आप बहुत लेट ज्वाइन किए हो. सॉरी मैम. नो सॉरी, नेक्स्ट टाइम. एक्चुअली मुझे टाइम पता नहीं था मैम. मैसेज किया गया था मॉर्निंग में 12:30 होगा, आप देखा करें. मैंने देखा मैम, पर शायद मुझे मिला नहीं वो मैसेज. आपका नेटवर्क इश्यू है शायद इसलिए. यस मैम. ओके, सो आप मुझे व्हाट्सअप करें अपना नंबर, नेहा मैम को बोलूंगी, वो मुझे भेजेंगी, देन आई विल ट्रांसफर दैट डिटेल्स. You have a network यस issue. मैम. So we have a do study. क्या पढ़ रहे हैं मनिंदर? Subjects is GMT. टॉपिक है बॉडी शेप, सब्जेक्ट हाँ, GMT. GMT. एंड जब हम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बॉडी शेप के बारे में, एंड देन साइज डिफाइन यहीं से होता है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल. ठीक है, सो यहाँ से स्टडी होती है. एंड मनदीप, मैंने आपको बोला था आप मुझे कॉल करेंगे, आपने मुझे कॉल नहीं किया. कॉल तो किया था मैम, बात भी हुई थी हमारी. ओके, नेहा मैम से आपकी बात हुई? नेहा मैम से नहीं हुई है मैम. ओके, कनेक्ट हर. ठीक है, आफ्टर क्लास. यस मैम. सो आज Yes, हमने ma'am. देखा वी हैव टोटल 8 टाइप ऑफ बॉडी बॉडी शेप. shape. Number 1, hourglass. Number 2, round apple. Number 3, pear shape. Number 4, inverted triangle. 5th नंबर में आता है lean rectangle. 6 में आता है rectangle, petite and plus size. कितने टाइप के बॉडी शेप है मनदीप? 8 टाइप. How you can define structures? स्ट्रक्चर से हमने डिफाइन किया है कि ये हॉर ग्लास है, ये राउंड एप्पल है, दिस इज द पियर साइज, दिस इज द इन्वर्टेड ट्रायंगल, प्लेन कॉलम, रेक्टेंगल, पिटाइट एंड प्लस साइज. मनिंदर क्लियर? मृदुला क्लियर?
Now do practical class right now. Only make the shape and define the or characters. Make the shape ठीक है only and define the character only, because अभी आप लोगों ने flash figure नहीं सीखा है. So ठीक है make a shape only and define the character on your sheet. फटाफट start now. और अपने आइडिया से इसमें ये भी मेंशन करना कि किस तरह का ड्रेस, वैसे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ही अलग अलग बॉडी शेप में कैसे करते हैं. अच्छा, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है क्लास में वो भी समझ लीजिए, क्योंकि समटाइम्स आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्लास में प्रैक्टिस कैसे करना है. तो क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी A3 ड्राइंग कॉपी लेंगे, हॉरिजेंटल्स में जाएंगे और यहाँ पे आपने बनाना है 4x3 के शेप्स, और इसी के अंदर आप शेप डिफाइन करेंगे. फॉर द एग्जाम्पल फर्स्ट वन क्या है अपना, आर ग्लास. आर ग्लास. आर ग्लास के लिए कैसे करना है आप लोगों को, सिर्फ आर ग्लास का शेप बना दीजिए. सॉरी, ये ऐसा नहीं होगा. ऊपर आपका चौड़ा रहता है, बीच में स्लिम होता है. आर ग्लास कैसे बनता है, ऐसे ऐसे लाइन खींचिए और इसको शेप आउट कीजिए.